हेलो, मेरा नाम टीना है एंड many people know me क्योंकि मैं पिछले साल ही ओएसिस से जुड़ी हूँ और लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो 2 महीने ही हुए थे मुझे ओएसिस के साथ कनेक्ट हुए और इस ओएसिस एनुअल रिट्रीट में बहुत से नए लोगों से फिर से मुलाकात हुई और शुरुआत में शायद नहीं हम अब तो तीसरा दिन है तो मिलते मिलते सबको एक दूसरे से पहचान हो ही गई है। सो ओएसिस दिल्ली का जितना भी काम है वो मैं संभाल रही हूँ। सो 2021 का सफ़र जो पहला साल था बहुत फुल ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लॉट्स ऑफ जॉय एंड बहुत ही सुंदर सफ़र रहा। काम तो बहुत हुआ, ऑनलाइन बहुत काम हुआ, कई लोगों ने ऑनलाइन में काम जो हुआ वो देखा भी, ऑफलाइन भी काफ़ी काम किया। ऑफ कोर्स को जो डेल्टा कोविड वेव्स चल रही थी और दूसरे काम थे उसकी वजह से जो जितना मैक्सिमम हम कर पाए हमने फुल कोशिश के साथ अपने दिल से काम किया। तो थोड़ी सी एक झलक जो काम हुआ 2021 में वो पहले देख लेते हैं, फिर उस काम को करते समय क्या कहानियाँ थी वो हम फिर सुनेंगे। So just a quick glimpse of the work which we did in 2021 and then we'll have some nice stories as part of the Oasis Delhi completes 1 year. Continue to work with the youth of Delhi NCR in the coming year ahead through various Oasis programs to recognize and prepare social leaders who will create a positive change in society. Some numbers just to show the work which happened and the glimpses. But मैं सोचूं अगर रिफ्लेक्ट करूं कि हमारे इस 1 year के सफ़र में क्या खूबसूरत हाइलाइट्स रहे हैं तो एक मतलब I can divide it into 2 parts, the highlights of my year. One was that I was able to reach out to the socio-economic weaker backwards communities of our region and the disadvantaged people who would never have had the opportunity if I had not provided them this platform. So that was a very very gratifying journey for me and in that process because all the work that I did I reached some of the because most of the schools were closed, so some of the NGOs जो काम कर रहे थे, the ones which were open despite the tough situation we were in were the children who had no choice. They had to continue to do something or the other. So उन slums में, उन areas में जाके जो मैं काम कर पाई, उन regions में जो बच्चों को मैं touch कर पाई और उसके through जो उनको मुझे opportunities देने का मौका मिला, वो एक बहुत heartwarming मेरे लिए पूरा journey था। तो शुरुआत एक जैसे बहुत से NGOs थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई और बहुत जिन्होंने खुले दिल से ओपन आर्म्स के साथ मुझे काम करने का मौका दिया उनके साथ and I'll start with one NGO which was Siddharth Memorial Charitable Trust
which is in the Delhi NCR Noida region, जहाँ से एक मिसाल जो मैंने क्योंकि दो मिसाल किए थे, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, तो ऑनलाइन मिसाल की एक लड़की विनर निकल के आई थी, तो फिर मैंने वहाँ उनको ऑफलाइन मिसाल के लिए अप्रोच किया, उनके साथ लाइव कैम्प किया, और the founder, she was like-minded, like what we have her thoughts. That small little NGO was founded by her, but it was run by the students who were the beneficiaries of that NGO. So जब मैं वहाँ गई तो मुझे I was really happy to see कि जैसे हम Oasis में सब youth ही हैं जो सब काम करते हैं, तो वहाँ पे भी कोई बच्चा ट्यूशन्स ले रहा है, कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट संभाल रहा है. सो इट वाज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट वी वर डूइंग बट ऑन अ मच स्मॉलर स्केल. एंड वहाँ की एक जो वहाँ मैंने मिसाल किया, सो दे gave me the center. They said आप यहाँ सेंटर में करिए. वो सेंटर ही मेरा पूरा बन गया. वहाँ मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स का ओरिएंटेशन हुआ, जीडी हुआ, प्रोजेक्ट वर्क का हुआ, सेलिब्रेशंस भी मैंने उन्हीं के सेंटर में करा. सो दे रियली and one of the girls who was the Misal winner from the online, she became the volunteer, who's Madhu, who couldn't be here unfortunately, but she helped me and looked after that entire Misal for me. So it was a very beautiful experience working with Siddharth Memorial Charitable Trust. Unfortunately, Poonam, the founder, and Madhu and Priyanka, all the people who were part of the journey with me, couldn't be here to share their stories. But just to give you a perspective, they are already doing L3 program with some of the students here who have joined from Kerala. So they are started their journey of transformation through their first MHS 1 हो गया है उनका. तो वो भी मेरा बहुत अच्छा लगा कि मैं बच्चों को यहाँ तक ले आई, ओएसिस वैली तक. चाहे 3 ही पहुँचे, इतने मिसाल विनर्स ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, लेकिन उनमें से 3 पहुँच पाए. पर उन्होंने फाउंडर जो है, उन्होंने बहुत दिल से एक मैसेज भेजा है हम सब के लिए. तो अगर आप प्ले कर देंगे तो वो that will just give you the little summary of the joy they felt with the work which happened. Namaste. I am Poonam from Ek Prayas, Siddharth Memorial Charitable Trust. Our 2 girls from our NGO, Priyanka and Madhu, they attended your program, and I cannot express my gratitude in words, because the kind of learning they had and whatever they learned there during the workshop and they shared with us, it was like all the children, they are very keen now further to join these workshops. So I request Oasis organizers and Tina especially to keep conducting these type of workshops here locally also, like in Noida or Delhi, so that more and more children then can be benefited out of it. I'm really thankful to Oasis organizers and Tina for giving such a wonderful opportunity. Thank you so much. Thank you. मिसाल में stage 1 और stage 2 में नहीं आ पाए. They're all now waiting for the next मिसाल, and so many more want to join. So that was very nice. So like I said कि जो कई इतने inspirational youth जिनके साथ मेरी मुलाकात हुई है इस through this 1-year journey, उनमें से एक युवा था विकी. विकी भी यहाँ L3 पार्टिसिपेंट रहा है. सो आप सब काफ़ी लोग जानते हैं उनको, लेकिन विकी की कहानी बहुत ही पावरफुल है. आई विश ही वाज हियर टू टेल इट हिमसेल्फ, बट ही हैड अ फैमिली इमरजेंसी, सो ही कुडंट कम. And Vicky is a boy who I could connect and reach to, and I'm so thankful that I did, because he is a boy who had almost nothing when he was growing up, and he grew up and he braved all odds, and he managed to finish his education. But like we were just discussing before lunch, the pay it forward. So even though he didn't get much, he decided to go back to the same slum community from where he rose
and he started his own NGO. He's only 23 years old, and he runs his own NGO called Divya Tarang Foundation, and he teaches all those slum kids, and he goes from various regions. He teaches them on the roads, he teaches them in a small room which he has rented. So he is a true inspiration and a true hero, and I'm so fortunate and I feel so proud that I managed to reach him. He joined Misal and he became the winner, and now he's doing L3. So it's such a joy for me, and I feel so proud that I could give him this platform. So that is the story in a small nutshell about Vicky. And so again, Vicky has sent a little video which we'll all have to hear. So because he was really sad that he couldn't come, he would have loved to be here with all of you. So a small message from Vicky. हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकी है और मैं 23 वर्ष का हूँ। मैं एक एनजीओ चलाता हूँ जिसका नाम दिव्या तरंग फाउंडेशन है। मैं दिव्या तरंग फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। मैं ओएसिस वेले को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ओएसिस वेले के कारण मुझे अपने आप को जानने का मौका मिला। और उससे पहले मैं टीना मैम को सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिलाया कि मैं L3 कोर्स में हिस्सा ले सकूँ। उन्होंने बताया कि किस तरह हमें एस्से को लिखना है और कैसे इस कंपटीशन के लिए हमें तैयार होना है और कैसे सिलेक्ट होना है। देन इसके बाद मैम हमारे एनजीओ में आई और उन्होंने हमारे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिखाई। उन्होंने एक लाइव कैंप कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने लाइफ के इम्पोर्टेंस के बारे में बच्चों को बताया और बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए इससे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। इसके बाद हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे एनजीओ के बच्चे जो भी थे, ये मीडिया वर्कशॉप के लिए वेले गए, यानी ओएसिस वेले गए और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा कि किस तरह हम अपने मोबाइल एडिक्शन को दूर कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल यूज़ करने के हैबिट को कम कर सकते हैं और कैसे हम अपने गोल को अचीव करने पर ध्यान दे सकते हैं। और वो जब वहाँ से आए तो उनका बिल्कुल जो रवैया था पूरा बदल चुका था और वो पहले से और ज़्यादा बेटर हो चुके थे और अभी भी वो अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत दुख है कि मैं इस बार एनुअल रीट्रीटमेंट में नहीं आ पाया क्योंकि थोड़ा सा मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसके कारण मैं यहाँ नहीं आ पाया। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन आई होप कि आगे और मुझे मौके मिलेंगे और इसी तरह मैं ओएसिस वेले के साथ, ओएसिस के साथ हमेशा जुड़ा रहूँ। So, like he was saying, we also had a social media workshop. So हमारा एक social media workshop भी था, so that which Ria had conducted, and that was all about mobile phone addiction. And 7 children came from Delhi, so that was also a great thing. And 6 of them were from his little NGO. So that was, and they are all working on their goals and having weekly meetings. They are connected with the Oasis Valley team with Ria. So their journey of self-transformation has also begun. And that was also a wonderful thing that we could give them that platform at such a young age. Some of them were only 15, 16-year-old who reached here for and they traveled alone. So I was like so happy that they were so determined and that they were inspired by Vicky's success, his achievement. So they also wanted it and they came here. So, and because they were also part of Misal, and they couldn't clear, some of them couldn't clear round 1, some of them couldn't clear round 2, some got dropped at round 3, so they still have that fire going in them and they're going to continue to do more. So then we also, like I said, I continue to find such wonderful gems throughout this city. And there's this group of girls who are slum girls who are playing soccer and through an institute who is working on character building through education.
So there's a foundation called Khel Khel Mein Foundation, and they are promoting sports. And one of the girls had participated in Misal from that foundation. So I got connected with the foundation, and I went and I met the children in the slums of Sangam Vihar, which is the second largest slum in Asia after Dharavi. It is a huge. You get lost over there basically if you go inside, and so I went and I met those children, the girls. It's an all girls soccer team, slum soccer team, and they are amazing. इतनी powerful लड़कियां हैं, and उन्होंने कितने barriers break करे to be able to reach वो ground तक पहुंचने के लिए भी उनके parents their negotiation skills. There's so much what they had to overcome to be able to just reach the playground. And वहाँ पे लड़के उनको they tease them, they are sniggered upon by others, but still because it was helping. And some of the children after Misal they shared such stories with me. I did a life camp with them, and I would go and encourage them while they were playing and sometimes be their timekeeper. And you will not believe that some of these girls, after such practicing so hard, when they participate in the tournaments, they beat some of the British school, American school girls who spend so much money on their training, and they still go to those tournaments and they beat those children. And some of the children from this slum girls soccer team got selected in the Delhi team as well to represent the nationals. So it was so powerful to see these children. And when I conducted the workshops with them, the sessions with them, the Misal orientation with them, it was a very inspiring for me as well. And one day they'll be here, maybe as DIC or something. I have to figure out how to bring the entire soccer team here, but definitely I would love to do that. And so that was another very big highlight for me, because like I said, these were the children, even though quantity may not have been huge, but the quality and the future potential leaders which I found was truly the most beautiful part of my journey of 1 year. So would you like to see them play little bit? Okay. So just a small video, very small. In that you will see that in the slums there's a garbage lying around, there are cows, there are boys hanging around teasing them, but they are still continuing playing. A very small glimpse, but yes, you can watch. And then Hello Oasis family, myself Anirban Ghosh, co-founder of Khel Khel Mein Foundation, which works in Delhi with the disadvantaged communities, with children there, to ensure holistic development through sports. I'd like to thank Tina especially for her support throughout the last year to the girls in our program and being a support structure to them. Especially the life camps which she facilitated has been a great learning experience in terms of the girls knowing themselves better and knowing their friends also, and accepting themselves, which is a very key thing in terms of improving themselves.
And I'd like to thank Oasis family for this invite, but really sorry not to be able to attend the same this time, and looking forward to attend surely next year. Everyone, stay safe, stay healthy, and enjoy and this experience which I missed. Thanks. Bye. So, like he was saying, the girls had a difficult time with self-acceptance because even though while they were playing football, it was different, but when they were off the soccer field, it was a different life for them, completely different. So that journey of self-acceptance and getting to know themselves and introspection was very, very important, and it's an ongoing process. So it's not that I just done one life camp. So I continue to meet these children almost on a weekly basis. I go and I just stand and watch them play, and sometimes they give me some chores to do, like Didi, we are supposed to time from one, how long do I keep the ball with me before the other person takes it. So I'm there, sometimes the time scorer, I'm doing all kinds of things. So I just go and help, so they come and continuously share, and the journey continues for them to keep on transforming. And so that's how the journey has been continuing. uh, Last year when I came to the annual retreat, I talked about one boy with whom my journey began in Oasis when I started. And some of you who are here would remember my stories. I spoke about Upender, and Upender is someone जिसके साथ मेरा ओएसिस का सफ़र शुरू हुआ पिछले साल, एंड ये मेरा नॉर्थ स्टार सुपरस्टार जो मेरे साथ बैठा है आज. एंड I am so proud. And when yesterday all of you were standing there and taking the commitment, and he gave his lifetime commitment to Oasis, I was really like a proud mother standing there. And it's like, okay, so this whole year, whatever I have achieved and the work that I have done, he has made it all worthwhile with it's so, I cannot, I'm like at loss of words with the graph and the growth that Upender has. But जब मैंने उसको, या उसने मुझे ढूंढा या मैंने उसे ढूंढा पता नहीं, पर हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया. एंड इन हमारा जो सफ़र स्टार्ट हुआ साथ में, उसके लिए अब मैं उपेंद्र is here with me, so he will say something to tell about his journey which we have embarked upon together. Over to you, Upender. Yes, तो thank you. और अगर मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट करूं तो स्पेशली 2021 में ही मेरी असली लाइफ स्टार्ट हुई थी. सही बताऊं तो जब मैं ओएसिस से जुड़ा था, या ओएसिस से मैंने नाम सुना था. मैं अगर ओएसिस से पहले की अपनी थोड़ी सी बस, मेरे पास टाइम बहुत कम है और मुझे बोलना बहुत सारा है, उसमें मैं शॉर्ट करके आपको बताऊंगा अपनी स्टोरी. मैं कैसे मिला टीना दीदी को वैसे बताता हूँ. तो एक्चुअली मैं जॉब करता था, और जहाँ टीना दीदी रहती हैं तो उनके जो गली है वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, तो मैं उनको वॉश करता था. तो टीना दीदी के ऊपर ही 2 फ्लोर थे, तो उनकी भी मैं गाड़ियाँ वॉश करता था, और उनके लाइन में बहुत सारी गाड़ियाँ
मैं वॉच करता था, तो टीना दीदी रोज़ अपने डॉग को लेके बाहर घुमाने आते थे और मैं उनको रोज़ नोटिस करता था कि यार, और मैं उनके बारे में सुनता भी था कि इन्होंने गार्ड्स जो हैं वो कहते थे कि ये जो फैमिली है बहुत अच्छी है, बहुत यार अच्छी है, यस। लेकिन मैंने आज तक बात नहीं करी थी एक्चुअली। मैं एक्चुअली में ऐसा था कि मेरे माइंड सेट था मेरा, जो मैं अभी टीना दीदी को बोलूँगा तो एक्चुअली मैं उनके सामने नहीं बोलूँगा। मेरा एक माइंड सेट ये था कि बड़े लोगों से मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मैं तो एक्चुअली कार वॉश करने वाला लड़का हूँ। तो ऐसा मेरा माइंड सेट था, ओके। ये मेरा माइंड सेट था कि मैं कैसे कर सकता हूँ टीना दीदी से आगे। देन ऐसी मेरी जर्नी रही है। मैंने कम से कम 6 साल 7 साल मैंने कार वॉश करी है। 9th क्लास से स्टार्ट कर दिया था, ये अपनी छोटी सी जॉब स्टार्ट कर दी थी। देन 2021 में ऐसा कोविड तो चला था, कोविड में भी कार वॉश करने जाता था क्योंकि मेरा काम तो चल रहा था मुझे ऐसा छुट्टी नहीं मिला था। उसी टाइम क्या हुआ, इनविटेशन आया, दीदी ने डायरेक्ट नहीं बोला, इनके ड्राइवर आया और बोला कि ड्राइवर से अच्छी बातचीत थी क्योंकि ड्राइवर गार्ड्स और कार वॉशिंग वालों की अच्छी दोस्ती होती है, बाहर रहते हैं अच्छे अच्छे दोस्ती करते हैं, अंदर की बात अंदर करते हैं, बाहर की बात अंदर करते हैं, ऐसी बात होती है उनसे। तो उन्होंने ऐसा अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी बात थी, मैं इतने अच्छे से हम लोग बात करते थे, मॉर्निंग में आके गुड मॉर्निंग ऐसे बात चल रही थी। तो एक्चुअली प्रमोद भाई, तो प्रमोद भाई उनका नाम था। उन्होंने बहुत अच्छे थे, उन्होंने टीना दीदी को बताया और उन्होंने मेरे से आगे बोला कि उपेंद्र और टीना मैम बुला रही हैं, जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि टीना मैम बुला रही हैं, क्यों बुला रही हैं मुझे नहीं पता। ये तो मेरे लिए शॉकिंग था कि क्यों बुला रही है मेरे लिए। मेरा काम खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, मैं हाथ पैर धो रहा था, कपड़े वपड़े धो रहा था जो गाड़ी वॉश करते हैं उससे। देन मैं गया, वेट किया बाहर, बेल बजाई, दीदी बाहर निकली। तो उसके बाद मैं सोच रहा क्या होगा ऐसा, मैं डरा हुआ था क्योंकि एक्चुअली मैं कभी जाता नहीं था। मैं जिसका काम करता था उसके ऊपर सैलरी लेने या कुछ चाबी लेने ही जाता था, बाकी मैं ऐसे बात नहीं करता था किसी से भी। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने अचानक बुलाया मुझे, मैं डर गया था कि एक्चुअली ऐसे क्या गलती हो गई, मैं तो ऊपर वाले की गाड़ी करता हूँ, इनकी तो गाड़ी करता ही नहीं हूँ तो ऐसे मैं डर गया था थोड़ा बहुत। लेकिन जब मुझे ये पता था कि हाँ ये अच्छे हैं, इसलिए मैं गया था, नहीं तो मैं जाता नहीं। तो इनके पास गया, देन उन्होंने मुझे जो बताया और नाम पूछा, जो मेरे को जो उनका बात करने का तरीका वो मेरे को भा गया कहीं ना कहीं, मेरे को लगता। और इन्होंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या करता है, कहाँ है, जो मेरा पूरा परिचय पूछा जो मैं हूँ, वो चीज़ तो बराबर है। लेकिन एक मेरे को वो थी कि यार, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है, इन्होंने बुक्स दी, लाइफ कैम्प की दी, एग्जाम की ऐसी ऐसी थी, वो पढ़ो, ये वाली पढ़ो। मैंने वो बुक्स ले ली, लेकिन मैं उस टाइम सीरियस नहीं था, मैंने सोचा चलो होगा कुछ ऐसा, बिल्कुल सीरियस नहीं था मैं ऐसा। तो देन ऐसा हुआ और मैंने बुक्स पढ़ी, लेकिन इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी, तो मेरे को थोड़ी समझ में आ नहीं रही थी, थोड़ी स्टोरीज पढ़ी थी, समझ आया था। देन फिर ऐसा हुआ कि मैं एनजीओस में पढ़ने जाता था, ट्यूशन्स क्लासेस होती थी मेरी, आर नाम एनजीओ था, उसमें मैं पढ़ता था। तो वो तो 10th क्लास में पढ़ता था, लेकिन मैं 12th में मिला, 12th में नहीं, फर्स्ट ईयर में मैं दीदी के साथ मिला, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया, ऐसा था। देन उसके बाद जब ये कैंप, फिर लाइव कैंप की बात टीना दीदी ने मुझे बताई कि लाइव ऐसा है, हम करेंगे, और मुझे बता कहाँ कोई एनजीओस है तो बताओ। मैंने हाँ है, बहुत सारे हैं। मैं भी एक्साइटमेंट था कि एक्चुअली है क्या ओएसिस, तो मैंने बताया, हम लोग गए। जब मैंने उसको एज अ लाइव, बिल्कुल कहते ना, मैं पार्टिसिपेंट ही था एक तरह से, मैं वो तो दीदी की हेल्प कर रहा था एक तरह से, वॉलंटियर लाइक मानो, लेकिन पूरा मेरे जहन में उतर गया वहीं के वहीं। कहते ना कि अमृत पूरे तो अमर हो जाते हैं, ऐसे मुझे ओएसिस का उसी दिन अमृत मिल गया था, जो उसी टाइम में अमर हो गया था। और मैं उसी टाइम मैंने फैसला कर लिया था कि बस ऐसा कुछ हो कि यार मैं इसमें पूरे ही अभी तो थोड़ा एक बूंद लिया है अमृत का,
पूरा वो ले लूँ मैं, ऐसा मेरे लिए था। ये लेके देन फिर मुझे एक बात आई कि अब ओएसिस जाना है, ओएसिस वैली जाना है, गुजरात जाना है। गुजरात के लिए बड़ी प्रॉब्लम ऐसा था कि फाइनेंशियली ऑलरेडी वो था, और पेरेंट्स ऐसा कहते थे कि तू जॉब कर, बस तू कुछ मत कर। जो मैं काम करता था वो कहते थे कि तू ये कर रहा है और पढ़ भी रहा है तो बेटर है, आगे तेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन मुझे पता था कि मेरा डिसीजन मुझे, और फिर उसी टाइम मतलब मैं ये बताना भूल गया कि दीदी ने ऐसा बोला था मुझसे इसी दौरान कि गुजरात क्यों जाना है। उन्होंने एक बात मुझसे बोली थी, तभी मेरे को सब कुछ छोड़ना मैं मजबूर हो गया था, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 35 अराउंड गाड़ियाँ थी साफ करने की, अपनी नहीं थी, गाड़ियाँ साफ करता था। तो वो छोड़ने के लिए मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो था कि यार इतना बड़ा जॉब है कैसे छोड़ूं, पढ़ भी रहा हूँ। तो उन्होंने एक बात बोली थी मेरे से, भूपेंद्र तुझे जिंदगी भर गाड़ियाँ साफ करनी है, तुझे जिंदगी भर यही करना है। उस टाइम मैंने बहुत सोचा, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे। यार बोला तो सही है, गाड़ियाँ तो धोनी नहीं है, मुझे छोड़ना तो है ही, कैसे छोड़ूं उसको मैं। देन मैंने उसको फैसला वहीं के रात कर लिया, और मम्मा को मैंने बताया तो मम्मा तो ऑलवेज कहते हैं ना, ममता जाग जाती है मम्मी की, तो वो तो रोने लग गई कि नहीं तू नहीं जाएगा 1 महीने के लिए। मैंने बोला मैं 2 साल के लिए जा रहा हूँ, 1 महीना भी नहीं बोला, मैंने बोला 2 साल के लिए जा रहा हूँ एमए चीज के लिए। ऐसा हुआ तो वो जो कहते हैं ना, मेरे को लग गया था कि कैसे भी स्ट्रगल आए मुझे फेस तो करनी है, क्योंकि ये डिसीजन मैंने ले लिया है अब। और लाइफ कैंप लिया था तो लाइफ चॉइस तो मेरी थी, लाइफ मेरी है तो चॉइस तो मेरी है। तो मैंने उसी टाइम ही वो चॉइस लेके मैंने, और मम्मा पापा को सबको मना के, उन्होंने बहुत मेरी टिकट नहीं कर रहे थे तो टीना दी ने टिकट करके दी, ले तू टिकट अब जा। पेरेंट्स तो नहीं करेंगे टिकट, क्योंकि वो तो बेटा है, बेटे की टिकट कर खुद हाथ से नहीं भेजेंगे। टीना दीदी ने कर लिया टिकट, लो अब तू ऐसे जा और कोई तुझे नहीं रोकेगा। ये सब कुछ करके जो मेरी जो लास्ट मंथ की जो सैलरी थी, जितने भी मुझे मिलते थे उसमें से डीआईसी के लिए 5000 देने थे, तो उसको मैंने सारा कुछ बैलेंस करके एडवांस लेके सब कुछ ले ला के मैं पूरा हिसाब बराबर करके मैं वहाँ से, सब लोग शौक थे कि तू कहाँ जा रहा है, ऐसा क्या है तेरे हाथ में तो तू जा रहा है, सब इतनी अच्छी जॉब छोड़ के और पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ के जा रहा है। तो ये सब करके उन्होंने इतना मेरे को हुआ कि अब तो जाना है, कुछ भी हो जाए, पैसा कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो मैं कमा ही लेता हूँ, मुझे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की मुझे देखना नहीं, मुझे अपने आप को बनाना है। और उसी लाइफ कैंप से मैंने अपने आप को बनाना उसी वहीं से स्टार्ट कर दिया। और अभी तक, अगर मैं अभी तक अब जर्नी शॉर्ट में बताऊं तो अभी तक मेरे लिए जो इतनी सारी ब्लेसिंग रही है, इतने सारे, और जो एमएचईस में आया, सबसे बड़ी तो एमएचईस की बात बताऊं कि मैं जो एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करता हूं कि एक्चुअली मुझे गुस्सा पहले बहुत आता था, और मेरा गुस्सा हाइपर इतना होता था कि मैं एक छोटी सी बात को मैं बहुत बड़ा बनाता था। और कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी तो ऐसी है कि कभी ठीक तो करना है, चाहे टेढ़े से करें या सीधे से करें। तो मुझे एक्चुअली खाने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सही बताऊँ तो जिस दिन खाना थोड़ा कम मिलता था उसी टाइम मैं बहुत वो हो जाता था, उसी टाइम बहुत हुआ। एक्चुअली मेजोरिटी तो आ गई थी, लेकिन क्या ऐसा ना कि हो जाता। अब तो ऐसी स्ट्रगल मेरी चल रही थी उस एमएचईस के दौरान। वैसे और लैंग्वेज सबसे बड़ी थी कि लैंग्वेज तो मेरे को आती ही नहीं थी गुजराती। मैं दोबारा बोलता, रिपीट करो दोबारा, मैं समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन आज अभी भी स्ट्रगल चल रही है, अभी भी मैं उस चीज़ को सह रहा हूँ, अभी भी उस चीज़ को मैं लर्निंग के तौर पे, अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं उसको सीख रहा हूँ। और ये जर्नी मेरी सीखने की है और इसमें सीखता ही रहूँगा हमेशा। और सबसे यहाँ मैं आज जो मैं इधर बैठा हूँ इसके लिए तो मैं बहुत बड़ा एहसान तो नहीं, एक कहते हैं ना कि जिंदगी दी है मुझे, एक नई जिंदगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मेरे लिए
ओएसिस एक नई लाइफ है और मेरी लाइफ तो ओएसिस है, तो मेरी लाइफ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओएसिस है, तो ये चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ओएसिस ही बन गई है। और यहाँ तो मेंटर्स हैं, लेकिन जिसने मुझे यहाँ तक भेजा, जिसका सारा एफर्ट मेरे लिए रहा, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे पास बैग भी नहीं था तब भी उन्होंने बैग करके मुझे बैग दिया, तू जा उपेंद्र, तेरे को यहाँ नहीं रहना है, तू जा, अपने आप को बना, तू तू मेहनतू है, कुछ भी है, लेकिन तू इतना अपना जो इतनी ताकत है वहाँ जाके यूज़ कर, कुछ समझ। इतना जाके मेरे को ये सब, एक कहते हैं ना कि जिंदगी में एक सेकंड पेरेंट्स होते हैं, एक पालने वाला तो एक जन्म देने वाला। तो पालने वाला जन्म देने वाला तो है, लेकिन उससे बड़ा, कहते हैं ना, उससे बड़ा वो टीना दीदी है मेरे लिए। वो मेरे लिए टीना दीदी है। और मैं उनके इंतजार, मतलब वही से जब दिल्ली आया था तो उनको हमेशा मिस करता था कि यार वो कब आएंगे। वो कहते थे कि मैं आऊंगी, मैं उनका वेट करता था कि टीना दीदी आए। तो यही मेरी, और आए थे तो आते हैं, उनको कितना देख के खुश होता हूँ कि यार एक एनर्जी आ जाती है, जब भी वो आते हैं तभी एक एनर्जी आ जाती है कि यार आ गए बस। तो ये जर्नी मेरी अभी भी चल रही है और हमेशा मैं एक याद रख के रखूँगा कि जो भी है ना, सब कुछ मैं एक टीना दीदी की वजह से हूँ यहाँ पे। और आज जो सीख रहा हूँ, जो कम्युनिटी भी है और मेंटर्स भी हैं जो हमारे बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, मेरी हेल्प करते हैं, मेरे को समझते हैं, तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है। और थैंक यू टीना दीदी। मैं टीना के लिए सिर्फ एक बात कहूँगी कि 1 साल के अंदर अकेले हाथ जो उसने काम किया दिल्ली में, आई थिंक मुझे बहुत हम्बल करती है उसकी एक चीज़ की, वो जितना प्रिविलेज है किसी के पास लाइफ जीने की, उससे कम्प्लीटली ऑपोजिट सेक्टर में जाकर और वहाँ से बच्चों को हेल्प करने, आई मीन जब सब कुछ होता है हमारे पास ज़िंदगी में, कोई कुछ करने की जब ज़रूरत नहीं होती है, सब कुछ अचीव कर लिया होता है, लाइफ बहुत इजी होती है। उस वक्त में काम भी करना और हार्ड वर्क करना, मैंने उसको देखा है 12-12 16-16 घंटे उसको काम करते। नोएडा कैंप लेने जाती, हर रोज लाइफ कैंप लेने, 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, 4 घंटे तो सिर्फ वो एक दिन, ऐसे 3 दिन जाती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शी गोज हैप्पीली, शी गोज कम्स बैक हैप्पीली। ये जो उसका बच्चों के लिए, यूथ्स के लिए का जो प्यार है और उसका जो पैशन, एक बार वो कमिटमेंट लेती है कोई भी चीज का, उसके बाद जो दिल लगा के सिंगल हैंडेडली जो काम किया, फॉर दैट यू स्टिल रिमेन, आई मीन सच अ ह्यूज इंस्पिरेशन टू, आई थिंक टू ऑल द सीनियर्स आल्सो, टू ऑल ऑफ अस। और आई थिंक a huge contribution to Oasis and lot of salutes to it. Thank you, So, but yes, synergies have begun, like we've been talking about, and a lot of youth volunteers are now going to join me. And we have from Kerala, we have a lot of people, some from Jammu Kashmir who might be joining, and so a lot of synergies going. Tina is attracting them. Delhi is attracting the youths of Kashmir. I mean, Jammu Kashmir, or all, not only Kashmir, and Kerala. So, of course, that plus the youth of Delhi as well. So that's going to be the future highlight for the coming year ahead. Just before I wrap up, another main highlight which was for the last year as well was working on partnerships, some of the key ones. One was with the NSS volunteers and the youth of Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University, with whom we did a lot of work. वो डॉक्टर प्रेम सिंह सिखवर जो वहाँ के प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उनके साथ ही हमारा पार्टनरशिप का सिलसिला शुरू हुआ
NSS डे में मैंने वहाँ पहुँच के बच्चों को संबोधित किया था। एंड उसके बाद एक और उन्होंने मेरे को 2-3 अवसर मौके मिले और उनसे कनेक्ट होने में। एंड ही हैज़ बीन वेरी वार्म एंड वेलकमिंग। एंड हमारी वो पार्टनरशिप अब इन द कमिंग ईयर अहेड और भी आगे प्रोग्राम्स उनके साथ होंगे। हमने कोरोना अवेयरनेस सेशंस किए, उसमें मास्टर ट्रेनर सेशंस हुए, उसमें भी वो NSS के वॉलंटियर्स जुड़े। तो मेरे और डॉक्टर नेहा के साथ जो हुआ कनेक्शन वो भी हुआ। सो विद द NSS volunteers and the youth of the university, we are going to do a lot of work going forward in the coming year ahead. Plus, there is another partnership program which we are is in the positive direction, which is with the Shiv Nadar University and Shiv Nadar schools, and that is again going to be a very big focus area for me, which is very much in the positive direction. I've done a lot of work together with Shiva. We have been connecting with them, and it's that will be another highlight which we will discuss about, and we will be working on the coming year ahead. तो ये हमारे थे highlights of 2021, and with that I would like to say thank you to everybody here and pass on the stage to the Jammu Kashmir team. Working in Kashmir is a tough challenge. Being a conflict zone, schools have uncertain long closures and pandemic worsened it. Finally, January 21, Oasis launched Samarthya, project for empowering young girls. While interacting with girls, I realize they have been voiced down by the society. They feel so weak and underconfident despite the immense potential in them. After Oasis programs, I have seen girls coming out of their shells. As someone who grew up in a same environment, it encourages me to step out and help them to find themselves. खुद पे हमेशा भरोसा रखना है, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो मुझ में पैदा हो गई। हम ये कह सकते हैं कि ओएसिस वालों ने मिसाल प्रोजेक्ट रखा था कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ हो, वो डरे ना बात करने में। मैं कह सकती हूँ कि वो लोग अपने इस मिशन में कामयाब हो गए हैं, बिकॉज आई एम द एग्जाम्पल। So I see these beautiful transformations of theirs from a caterpillar to butterfly, and it gives me immense confidence, pleasure and happiness, and it boosts me furthermore to go out and reach out to each and every girl out there.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As you know, that when Mahatma Gandhi launched the independence campaign, he said at those times that I see the ray of hope from Kashmir. I'm telling the back time, taking you to the times when the freedom movement started here. The same thing happened with the Oasis. Madam Shiva, I think, also saw the ray of hope from Kashmir, and it is an admitted fact that Jammu and Kashmir is the first government which entered into an MOS with the Oasis, because we have now time to do this. So, जब हम 2020 में यहाँ मिले थे during the annual retreat, at that time we decided that all the people at that time were very much enthusiastic to visit to Kashmir, and we had decided. I think so many people have raised hands and they gave their consent to come to Kashmir at that time. But man proposes and God disposes. We did not know at that time what will happen. And in the February or in the March month, not only the schools, not only the shops, I think everybody went confined to his home, and the whole country, even the whole world, came to the standstill. And what we found that it was very difficult. That was the very difficult time. That 2020 जैसे कि 2020 मैच होता है, मतलब बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी जाता है, लेकिन याद ही छोड़ के जाता है. तो इसी तरह से उसने मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक सारी दुनिया में तबाही फैला दी है. 2020 ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिला है. और 2021 में we are hopeful कि शायद हालात ज़रा सुधर जाएंगे. The conditions will be better, but more or less it was also the same. Still, that 2021 was my superannuation year. So at the same time, I had my own these engagements. But शिवा जी के सामने क्या चलता? उन्होंने मतलब अपने उस बड़ी जहनत से और मैं कहूँगा जादुई अंदाज से इस तरह से मेरे ऊपर वो कंबल डाल दिया कि मतलब वो कहा कि मतलब इस तरह से रागिब किया कि मतलब मुझे ना कहने के लिए कुछ बचा नहीं. तो I had to say yes, और मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है. तो thank God. I suppose let us please clap for this occasion that he accepted the responsibility of being the director of Oasis Jammu and Kashmir so humbly when he had other options available, and that was the time when he accepted to do this. So with all the deepest gratitude from all of us. From that time, we went to see the Directorate of Education, the Director of School Education. But what happened after some days, he got transferred and the new director came. So we had to prepare to see the new director there. Because in Kashmir, in Jammu and Kashmir, the schools would do it very much better if there is the government nod for doing such activities. So we had to approach the new director, and thank God that he responded well during our very first meeting. So he told us to go ahead, and he gave us an order for that in order to carry out the activities in Jammu and Kashmir. So we proceeded, and many schools, as I told you, the schools remain also closed, but we managed that misal programs in different schools, and we managed interacting with the different people, and we managed extending our programs with
communicated them telephonically. We used this social media, and many more friends joined this Oasis, and we have a very good number of the people which are associated with the Oasis now in Kashmir. Not only that, we have not remained confined to our city or our Srinagar, but we have the people from each and every area. Rather, I can say rather from each and every district of the Kashmir. So this is a very good opportunity for us. But only the thing that came hurt in our doing these programs, that was this COVID problem. So despite these difficulties, still we managed many programs on in an online mode, and there were also the programs from the central office, and many facilitators came, and many people from the Kashmir, they regularly participate in those programs. And they were, as I have told you, that the people from Kashmir always, they are open-minded. If something good comes to them, they will grab the opportunity. They take it. They should the positivity in that sense. तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मतलब जिस तरह से कि हमें बहुत सारे बच्चे इसमें शामिल हुए, और जिस कॉलेज में हमारे जो यहाँ पर जाए हैं, पता नहीं कितने सारे कॉलेजेस में ये गए हैं, डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, मुश्किलात होने के बावजूद, और एंड एवरी स्कूल एंड एवरी इंस्टीट्यूशन वेलकम हिम देयर. तो आई थिंक मतलब जो कि आपने यहाँ पर वीडियो में देखा है कि मतलब बहुत सारे जहाँ पर भी गए हैं कि वहाँ पर मतलब मैंने कहा कि मतलब मुश्किलात भी थे, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, और आपने कहा कि दिस इज कश्मीर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. हाँ, पता नहीं अचानक किसी वक्त हालात खराब भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं, पता नहीं मतलब अनटोल्ड भी हो सकता है. तो इट इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन देयर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट रादर देयर टू डू सच एंड सच थिंग्स देयर. तो इन हालात में भी मैं ये कहूँगा कि मतलब बहुत कुछ हमने किया है, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी भी रहा. टू एडमिट इट कैंडिडली दैट कि मतलब नहीं कर सकते हैं कि मतलब कोई न कोई डिफिकल्टी सामने आती थी. जैसे कि आप मतलब सब लोगों को मालूम है कि मतलब इन हालात में हर कोई सोचता था कि कैसे जान बच जाएगी. अच्छा, तो इस चीज़ का मैं मतलब जैसे कि मैं अभी ऑनलाइन की बात कर रहा था कि यहाँ पर कई एक प्रोग्राम्स हुए, खासकर जो यंग फैसिलिटेटर्स हैं, इनमें मैं आत्म जाकी का नाम लेना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम का मैंने मतलब बड़ी गौर से सुना है. वेरी इंटरेस्टिंग आई हर्ड टू हर व्हेन शी टोल्ड गर्ल्स डेयर से सामर्थ्य का प्रोग्राम, आत्मजा का सामर्थ्य का जो सेशन था. राइट. हाँ, तो उसमें मेरे लिए कि इट इज़ ए मतलब मोमेंट फॉर थिंकिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि जैसे कि उसने कहा कि मतलब जो समाज में जो अभी भी कुछ ऐसी रस्में हैं, ऐसे बिदात हैं जिनका ज़्यादा बोझ औरतों पर पड़ता है, ऐसी बच्चों पर पड़ता है जिनकी शादी होने वाली है, शादी के बाद की लाइफ होती है. तो मुझे लगता है कि मतलब किस तरह से इसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है. अब मसला यह है कि शी कैन नॉट ओनली अलोन डू सच थिंग्स, कि मतलब इस चीज़ को ये बातों तक महदूद नहीं रखना है. वी हैव नॉट लिमिट सच थिंग्स टू आवर टॉक्स ओनली, बट वी हैव टू वर्क, वी आर एट देयर बैक. मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे पास आज एक यंग फोर्स यहाँ पर है, एनर्जेटिक फोर्स है, और इनके कितने नेक विचार ख्यालात हैं, कितने अच्छे ख्यालात इनमें हैं. तो अगर ये ख्यालात नहीं बदल सकें तो फिर कब बदला जाएगा? When this nation will change if it is not today? Because the people I am addressing here, the student, these young learners, the young entrepreneurs to whom I am addressing here, I have seen in them very much courage, the courage of truthfulness, the way they have fought against the ill designs of the system here, for example, police, media, other things as well. I congratulate and salute their courage, their innocence and the truthfulness, the way they have talked to the media.
because they had no such exposure to stand before the police or other these agencies who have different tactics of interrogating. So I salute them all together to their courage and their this resistance, to their this I can say the exemplary this synergistic approach. So at that time I was telling about this thing. So this is the time to rise against such discrepancies which are present in our this system. जो हमारे समाज में इस वक्त भी वो बिदात हैं, बुराइयां हैं, मुश्किलात हैं, जो हमारी बच्चियां, जो हमारी बेटियां, जो हमारी बहनें जो मतलब ये सहम रही हैं, तो नहीं होना चाहिए ये चीज़. अगर ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ये चीज़ें, अगर ये मतलब कहीं पर ये है सही नहीं है, तो गलत चीज़ को क्यों हम मतलब आगे जाना देते हैं? Why we are tolerating such things? तो मुझे लग रहा है कि मतलब जो सोसाइटी जो मतलब जैसे कि मतलब बड़े हैं, छोटे हैं, जो खासकर जो वुमेन मतलब एजुकेटेड जो मतलब लॉट है, दे शुड कम एट देयर बैक, ताकि ये मतलब उन चीज़ों के खिलाफ, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो आराम करेंगे, उनको ये मुश्किलात सहने नहीं पड़ेंगे. तो दूसरी बात जो है कि मतलब जैसे कि मैं कह रहा था अभी कि इन हालात में वी हैव सीन दैट कि जो कोविड की जो परेशानी थी पूरे दुनिया में ये फैली हुई थी, और मैं यहाँ पर एक क्रेडिट देना चाहता हूँ संजीव भाई को कि मतलब इन्होंने इन हालात में भी लोगों के काम आ गए, ये सामने आ गए कि he has written a book on that, and that book has been translated into 7 or 8 languages. He deserves all applaud and all appreciation for that. अगर हम इन चीज़ों को दाद नहीं दे देंगे तो बाहर से कौन दे देगा इसको दाद? मुझे लग रहा है कि we should give, we should मतलब have a give a big hand. I don't know where he is at the present. हाँ, वो नहीं है इस वक्त, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसको एक big hand दे दीजिए. Despite these threats, the man he has come out, he has written a book on this. How we will prevent, how this COVID can be cured? How can we defend? How can we improve our immunity? So many things are there. और मैं इसमें एक बात ये ज़्यादा कहना चाहूँगा कि इससे हमें काफ़ी लाभ वहाँ पहुँचा है. इन्होंने हमें they gave us the Urdu translation because we in Jammu and Kashmir are particularly in the Kashmir, the students, the common person, they read Urdu, and they, despite they don't know about the Urdu, but they managed the Urdu. I don't know where from they have published it, perhaps Delhi or Lucknow, but the book is with me here. This is the book. A very beautiful book is here. This is the very beautiful book in Urdu. You can see it. This book is in Urdu, written by Mr. Sanjeev Bhai. And the translation has been contributed by Gulzar ji. So I must thank him. देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब इन हालात में कि मतलब आप देखिए कि इस किताब से कितने लोगों को सहारा मिला है, फायदा मिला है, कितने बच्चों ने पढ़ी है. और I will tell you recently, many schools they are organizing such programs online where the students go through the book and then they discuss the things. The teachers discuss the things with the students, and students discuss with their parents. Yes, with their siblings, their brothers, sisters. So I think a message has gone where from we have got the courage कि मतलब हमें हिम्मत आ गई है, वो हौसला मिल गया हमें कि मतलब नहीं, कोविड जो ऐसी है कि इस तरह से ये जानलेवा बीमारी नहीं है. अगर हमें पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ी सी हम अपनी मुदाफ़त पैदा करेंगे, हमें वो मतलब दम अपने आप में पैदा करेंगे, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगी. हाँ, no doubt we have to take the precautions. That's true. Dr. Neha is very much here. She has also trained us. She has also trained a group of the people from Kashmir, and then we transferred the same to the other people, as you tell here, that pay it forward. So we have paid it forward, of course. That is true, that the process is going on as of now, today. So I'm telling you, the people here, they do not think of only themselves.
they are not thinking of the reputation as we see the other people think in terms of those things, but they say what they do only for the humanity. The job is for the humanity. So it is because of this fact कि जिन लोगों को हम अप्रोच करते हैं, कितने भी रिजिड वो हों, अगर उनमें वो थोड़ा सा वो मादा होगा कि मतलब दिल में मतलब अच्छाई करने का, तो एकदम वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब किसी को थोड़ा टाइम लगता है, बाद में जो ज़्यादा होता है वो सिर्फ इस चीज़ हमें हमारी आवाज़ को मतलब सिर्फ उस हमारी आवाज़ जब उस तक पहुंचती है, when our voice reach such people, they immediately respond well. They say, of course, the programs are very good. The programs are extraordinarily nice because the people जो आजकल के हालात हैं, देखिए हम जा रहे हैं, हम आजकल कोई चीज़ टिकी छुपी नहीं रहती है, चाहे वो कश्मीर में हो जाए, चाहे वो केरला या मतलब कन्याकुमारी में हो जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस माना जाता है, कहीं पर भी कोई भी अनटोवर्ड एक्सीडेंट होता है तो सबको पता चलता है। इन हालात में मैं कह रहा हूँ कि मतलब अगर कोई चीज़ इन हालात में इस इंसानियत को बचाए, जो एक रखे, तो वो यही है, दैट इज द एजुकेशन, बट द एजुकेशन ऑफ हार्ट। मैं इस पर गौर कर रहा था, आई विल टेल यू फ्रैंकली, मैं कह रहा था कि ये कहते हैं कि एजुकेशन ऑफ हार्ट क्या है, लेकिन फिर मैंने जो मतलब हमारी रिलीजियस बुक है, कुरान में है, कि मतलब वहाँ पर ये लिखा ये क्या है कि मतलब इंसान को एक तो अकल से हम कहते हैं, हम कभी किसी को कहते हैं मैं आपको अकल से मोहब्बत करता हूँ, we are not telling we are loving you with our mind, with our brain, we are always telling I love you from the core of my heart, from my heart. So असल में ये होता है कि जो हार्ट की पहचान होती है, दिल की पहचान होती है, असल चीज़ तो यही है। अगर इंसान के दिल में विजडम आ जाएगी, अगर हमारे if the wisdom comes to our hearts, if it touches to our heart, then we are really the human people. Then we are the people who can come to help others. Then we will think in terms of others. Then we will not be self-centered people. So if the knowledge, if the wisdom comes to our heart, और वो जो यहाँ पर कहते हैं हमारे बोर्ड में यहाँ पर लिखा है, the education of heart is at the heart of the education, है ना? वो अगर हमारे दिल में एजुकेशन पहुंच जाएगी, if the education, अगर ये रोशनी, मतलब रोशनी हम जानते हैं कि एक रोशनी जो होती है कि मतलब सारे दुनिया को रोशन करते हैं कि हर कोई चाहे जिसको भी मतलब देखने की सलाह होती है वो देखता है कि कौन चीज़ क्या है। दूसरी रोशनी है कि मतलब तालीम की रोशनी, जो तालीम की रोशनी मतलब I can say the light of the education, उस एजुकेशन से इंसान पहचाना जाता है, that differentiates between the animals and the humans, that differentiates between the evil and the good person, noble persons. So this is that is the education. और मुझे लग रहा है जो यहाँ पर ये एजुकेशन का जो जिस चीज़ का आप लपे कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ हम इसके साथ जुड़े हैं, हम तो ऑलरेडी इसके साथ जुड़े हैं, तो हम कह रहे हैं कि मतलब ये बेसिकली ये वही एजुकेशन है कि जिससे हमारे दिल हमारे जो हमारे हार्ट्स होते हैं, दे आर लाइटेड, उनको रोशनी मिलती है, उनसे वो मुनव्वर होते हैं, तो वो रोशनी आप फैलेगी तो मेरे ख्याल में जो अंधेरा है कहीं कहीं जगह पर लगता है, कहीं पर एक किस्म के मतलब ये जो डार्कनेस है कहीं किसी रीजन में एक तरीके से होती शुरू, किसी रीजन में दूसरे तरीके से होती है, तो मुझे लगता है कि अगर मतलब ये चीज़ हमारी होती, ये चीज़ हमारे अंदर पैदा हो जाएगी, तो मुझे लगेगा कि ये हमारे लिए ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। ये जो वर्ल्ड हमारे लिए है, मेरे ख्याल में नाइस प्लेस टू लिव बन जाएगी। अदरवाइज हम ही लोग हैं कि जो इसके लिए जेल बनाते हैं, जो हम इसके लिए मतलब मुश्किलात का सामना पैदा करते हैं। वी आर मेकिंग दिस वर्ल्ड डिफिकल्ट समटाइम्स। और अगर यही जो रोशनी जो ये ओएसिस फैलाता है, अगर ये रोशनी फैल जाएगी, मेरे ख्याल में कहीं पर वो तफरीक नहीं रहेगा, कहीं पर वो मुश्किलात नहीं रहेंगे, कहीं पर वो मतलब ये मारामारी नहीं रहेगी, कहीं पर मतलब वो मतलब लूट खसूट नहीं रहेगा, तो शायद हर इंसान ये सोचेगा कि मतलब ईमानदारी क्या है, नेक नीति क्या है, दूसरों का ख्याल रखना क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैंने शायद काफ़ी टाइम लिया है, तो अब मैं दोस्तों को टाइम देना चाहता हूँ। तो मैं लेकिन एक बात मैं लास्ट में आपको कहूँगा कि जैसे एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी
that the Kashmiris are open to such things. I hope that this year, inshallah, if Allah wills, we will launch the programs again there in a very rhythmic and robust manner. So, I hope that every one of you, especially the people from every region, right from the Kerala, where the chemistry combines with us, right from the Kerala, Karnataka, Telangana, Delhi, Gujarat is there also. So I want the people from all these regions to come over there. Let us start our new journey together. So it will be very blooming. I think you will be also get a very good response from the people from Kashmir there, from the students of Kashmir, and this will be a joint venture. Inshallah, I hope that you will also cooperate with us, and you will also see the sceneries of the Kashmir, which you have visualized here in this video. Thank you very much. Thank you, Mr. Gulzar sahab. Let me proceed further. Let me introduce first of myself. I am Ashish Hussain Pal, working in Education Department of J&K Government of UT, earlier was the state. To do hard work is my passion since my childhood. As my teacher taught me in my childhood, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा खुदा है जो वह हो नहीं सकता. That means, I may translate it, if you have courage, you can do everything. There is not any knot which can be unfolded if you have courage. So I am working in the department since last 3 decades. I have worked as teacher, I have worked as lecturer, and nowadays I am working as principal at +2 level. Second thing is that I work in the last district. We can say it is पिछड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं, that is not economically backward, that is educationally backward, and that is also a border district, and my district is known as District Kupwara. So I had been working in that district, and often due to the lack of manpower, I have been given chance to have many portfolios. I am working as principal, and when I came to Oasis last time, I was having the additional charge of 3 more institutions, 3 more higher secondary schools, and that of one of the biggest zones of the Kupwara district, that is Zone Kralpura, and I was at that time also working as Zonal Education Officer. After Kalbim, I had 162 schools, including 3 high schools in my zone. It was very difficult task. The scenario of my zone was that there had been a scheme launched by our Honorable Minister at that time, Naeem Akhtar Sahab. That scheme was designed to be child friendly, but it was misused and it became teacher friendly.
we were having some institutions where there were having some 40, 50 students and more than 10 teachers. And we were having some some schools where there were having more than 300 students and only 2 or 3 teachers. And it was a big challenge for me. Even people who know me, who were asking me to do something for the zone. But when I approached my senior bosses, my immediate bosses, my CEO, Kopara, he doesn't allow me. And during this time, I visited Oasis. And I got a booster dose from this Oasis. When I left Oasis, I went to my place of posting. I first of all thought, how can I resolve? Fortunately, I got another CEO, and during his first meeting with all the zonal education officers, I discussed the thing that my zone, which comprises of 2 border areas too, is having a lot of problem, and that problem was some schools was having overall and very little number of teachers. Some schools were having very less number of teachers, and he gave me the permission for rationalization. And within 2 days, he gave me. I took the proposal and got the proposal approved. And I redeployed to their own place of posting more than 250 teachers. मैंने उनको वापस अपनी जगह पर कर दिया। और इसमें जो अच्छी बात है, ये तो मेरा फर्ज था, मेरा मनसब था, ये तो उसमें अच्छी बात जो थी, जो भी लोग मुझे मिलने आए, इससे तो मेरे जोन ने एक हैव को क्रिएट किया, बहुत सारे लोग मुझे मिलने आए, लेकिन सबने कहा कि you have done a very good job and almost it is 95% correct. It is 95% we can say, मतलब ये कि error free है। मैंने कहा 5% कोई गलती भी हो सकती है, कोई हम भी तो बशर ही है, हम कोई फरिश्ते तो नहीं है, 5% कहीं वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन 95% सही कोई काम होना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरे ये डोज जो मुझे मिला था, ये काम करने की हिम्मत जो मिली थी, ये करेज जो मिला था, ये मुझे ओएस ने दिया। इसी तरह से बहुत सारे काम किए, चाहे वो कोविड का सेशन था। कोविड में मुझे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि मुझे एक क्वारंटाइन सेंटर का इंचार्ज बनाया गया। तो क्वारंटाइन सेंटर में पहली रेल कोविड की कितना डर था। पहले ही दिन मुझे बहुत लगा कि जैसे मुझे कहीं फांसी पर, लेकिन दूसरे दिन मुझे याद आ गया कि ओएस में हमने क्या सीखा है। हमें हार्ड चीज़ों से लड़ना है। अगर ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड, बहुत ही बुरा वक्त है, तो इस वक्त मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर वो मुसाफिर आ रहे थे, जो भी वहाँ पर उन क्वारंटीन सेंटर, मुझे उनका हौसला बढ़ाना चाहिए और जितना मुझसे हो सका मैंने उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हमारा क्वारंटीन सेंटर जो है वो वाइंड अप हो गया। तो बहुत सारी स्टोरीज थी, शायद सारी तो मैं टच नहीं कर सकूंगा, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं कुछ आपको, तो एक बात है जिससे मुझे बहुत, वो कहते हैं मन की शांति। 2 बंदे आ रहे थे मेरे पास रेगुलरली कि हमारा स्कूल कई सालों से बंद पड़ा है,
हमारा अच्छा रोल है इस स्कूल को खोल दो। लेकिन ऊपर जब मैं बात कर रहा था वो कहते हैं क्लबिंग नेवर अलाउड। तो बाद मैंने उनका इसमें कोई क्लबिंग का ये बहुत सारे स्कूल उन्होंने मिलाए थे स्टाफ की डेफिशिएंसी की वजह से, कोई ऑर्डर है तो कहा कुछ नहीं। बहरहाल मैंने उनको भी अपने हिसाब से वो कहते हैं ना टरकाना, मैंने कहा था चलो ये 2-3 महीने की चार्ज है, तो फिलहाल मैंने उनको कहा कि आज मेडिसेशन है, आज तो नहीं हो सकता है, चलो अब देखेंगे मार्च में कर लेंगे। लेकिन फरवरी में वो लोग फिर आए मेरे पास, तो यहाँ से मैं बूस्टर डोज दे कर गया था। मैंने सोचा आज मौका है कि मैं अपना वादा निभा लूंगा। तो 2 फरवरी को मैंने वहाँ विजिट किया और मैंने जब खुद देखा कि उन बच्चों को मेरी जगह पर जहाँ मैं रहता था वहाँ पर कोई बर्फ नहीं थी, वहाँ पर 3.5 फुट बर्फ थी और 3.5 फुट बर्फ में 75 स्टूडेंट्स को एक जगह से तकरीबन 1.5 किलोमीटर उनको मूव करना पड़ता था, जबकि उनका स्कूल वहाँ पर मौजूद था। तो ये तो बड़ी बात है। मैंने ऑन स्पॉट ऑर्डर किए कि ये स्कूल जो है इसको रीओपन किया जाए। तो उसी वक्त टीचर को साथ लिया और स्कूल को रीओपन करवाया। और इसमें जो ज़्यादा शांति की बात है, वो बस्ती के वो बुजुर्ग लोग जो आ गए, वो मुझे कुछ गिफ्ट भी उन्होंने देने की कोशिश की थी कि आप यहाँ आए, आपने इतना हमारी लाज रखी। वो कह रहे थे कि आपने हमारी लाज रखी। तो इस जब कोई बुजुर्ग आपके सामने आए, वो गिड़गिड़ाए और आप उसके साथ निकलते हैं आपका काम, तो यकीन ये शांति की बात ही होती है। तो कोविड सेशन था लास्ट टाइम, जब गुलजार साहब ने कहा कि किताब भी आ गई है, तब तो नेहा दीदी के साथ हमने एक ऑनलाइन सेशन एक भी लिया था। तो उसके बाद मैंने तकरीबन अपने 3 स्कूलों में तो तकरीबन सारे स्टाफ को, जिसमें तकरीबन मोर देन 50 स्टाफ मेंबर जो है, उनको मैंने ऑनलाइन, और हम ये प्रोसेस जो है ये आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं बातों पर मैं इस वक्त इक्तिफा कर रहा हूँ। हाँ, लास्ट पर कंक्लूड करने के लिए मैं एक शेर कह रहा हूँ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। Myself, Dilbir Singh Sodi. Good afternoon to everybody. तो पिछले साल मतलब 2020 का जो रिट्रीट था, तो हमने अटेंड किया था और उसमें आप जैसे लोगों को सुना, तो कुदरती बात है एक जज्बा सा पैदा हुआ और हम यही सोच के यहाँ से निकले कि कश्मीर को बदलना है। तो 2020 में हमने 2021 में, क्योंकि 2020 में फिर कोविड ही रहा, 2021 में तो हमारा एक मतलब यहाँ से जय भैया आए और आयमन जी आई यहाँ से, वो गई तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे एक लाइफ कैंप लेना है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो हमने उनके लिए अरेंज किया अपने स्कूल के बच्चे, क्योंकि हमने सुना था कि जो लाइफ कैंप है वो ज़्यादातर दूसरे स्कूलों में हम करें, अपने स्कूलों के बच्चों के साथ ना करें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फिर हमने अपने जो बच्चे कोठी बाग गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे, तो जय भैया ने उनको वहाँ पे उनका कैंप अटेंड किया लगभग 3 दिन का। तो ये था लगभग जनवरी 2021। तो बच्चों का बहुत अच्छा वो प्रोग्राम रहा। उसके बाद मैंने बच्चों के इंटरव्यूज़ भी लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई
बच्चों ने मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, जो ज़्यादातर बच्चे लाइफ कैंप्स में सीखते हैं, तो बहुत खुश थे। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे कैंप्स JNK में ज़्यादा से ज़्यादातर होने चाहिए ताकि बाकी बच्चों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो उसके बाद मेरी कोशिश भी थी कि मैं खुद भी लाइफ कैंप्स ले लूँ, क्योंकि हमारे स्कूल भी ओपन हो गए, तो लेकिन उसके बाद कोविड का जो था वो स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने ऑनलाइन जो हमारे लाइफ कैंप्स थे वो लिए, स्कूलों के भी और कॉलेज के भी, उसमें मैं एज जूरी मेंबर भी रहा। तो मैंने बहुत सारे बच्चों के जो ऐसे होते थे वो मैं उनको जज करता था। तो मैंने देखा कि बच्चों में, कश्मीर के बच्चों में भी कितना टैलेंट है, कितनी मतलब उनकी अच्छी सोच है। बच्चे बेसिकली चाहे कहीं भी हों, चाहे वो गुजरात के हों, चाहे तमिलनाडु के हों, चाहे केरला के हों, चाहे कश्मीर के हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं और उनकी जो सोच होती है वो बहुत ऊंची होती है। जहाँ पर हम जैसे बड़े लोग जो पढ़ाने वाले भी हैं वो भी ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इनके अंदर ये सोच कैसे आई। मगर कहीं पे हम टीचर्स की कुछ ऐसी खामियां होती हैं कि हम उन बच्चों को समझ नहीं पाते हैं। तो लेकिन ये मैं तो सारा श्रेय ये ओएसिस फैमिली को ही जाता है। ओएसिस फैमिली को क्या, हम सबको जाता है, क्योंकि हम खुद ओएसिस ही हैं, हम खुद ओएसिस ही हैं। तो हमें ही श्रेय जाता है कि कितना अच्छा ये बच्चों के अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालने का कितना अच्छा एक जरिया बना है लाइफ कैंप। तो वहाँ के बच्चे भी बहुत खुश थे और हालांकि ऑनलाइन प्रोग्राम्स में भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और हमने भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब हम ऐसे पढ़ते हैं हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर क्या जज्बा है, क्या देशभक्ति का जज्बा है, कितना कुछ वो अपने वतन के लिए करना चाहते हैं, कितना कुछ अपने स्टेट के लिए करना चाहते हैं, कितना कुछ अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं, कितना कुछ अपने समाज के लिए करना चाहते हैं। तो बच्चे चाहे कहीं भी हों, बच्चे तो बच्चे हैं, लेकिन बच्चे कितने अंदर से मतलब वो पॉजिटिव हैं, कितना वो उनके अंदर सच्चाई होती है। तो क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ, 2 बच्चों का मतलब बाप हूँ मैं भी, तो मुझे वो बच्चे भी अपने भी याद आ जाते हैं जब बाकी बच्चों को देखता हूँ। उनमें बाकी बच्चों में भी समझ लीजिए मुझे अपने ही बच्चे नज़र आते हैं, क्योंकि जब बच्चों के साथ इंसान रहता है फिर ये फर्क नहीं लगता है कि वो बच्चा कौन है, वो बच्चा कौन है। मुझे तो वही जैसे मुझे सामने अपने ही 2 बच्चे बैठे हैं। तो ये फिर इंसान, क्योंकि ऐसे प्रोग्रामों से मतलब हम ये देखते हैं कि दिन भर हम एक दूसरे का सुनते हैं, ये भी एक प्रोसेस है, ये ऐसा ही टाइम पास नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जब आप हमारी बात सुन रहे हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो इस प्रोसेस में एक ऐसी लर्निंग होती है जो कहीं नहीं हो सकती। तो ये मैंने जितने भी आज तक मतलब रिट्रीट के जितने भी प्रोग्राम्स सुने हैं, देखे हैं, तो इसमें मैं महसूस करता हूँ कि इन प्रोग्राम्स में कितनी ताकत है और कितनी एनर्जी हमें मिलती है, साथ लेके जाते हैं और फिर वहाँ जब हम जाते हैं हमें नहीं लगता है कि कोई हमारा मुकाबला कर सकता है। तो एनर्जी ये हम शेयरिंग से एनर्जी हमारे अंदर में आती है। तो मैं लाइफ कैंप्स के बारे में बता रहा था, तो हमने वो कैंप्स ऑनलाइन किए जो हम ऑफलाइन करना चाहते थे, मगर कोविड की वजह से हमने वो ऑनलाइन किए। उन बच्चों के इंटरव्यूज़ लिए, उनके कितने अच्छे जवाब थे, मुझे आज भी याद है कितनी मतलब उनकी अच्छी सोच थी उन बच्चों की। मतलब उनके पेरेंट्स को भी श्रेय जाता है कि उनके पेरेंट्स की भी कितनी अच्छी सोच रही होगी जो इन बच्चों में वो सोच थी। तो वो हमारे जो प्रोग्राम थे वो बहुत अच्छे हुए ऑनलाइन, थैंक्स टू जय भैया और आयमन दीदी। हालांकि मुझसे छोटे हैं लेकिन नॉलेज में बहुत बड़े हैं हमसे, तो इसलिए हम उनका आदर करते हैं। तो उन्होंने और भी बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने वहाँ पे किए, तो इनकी भी दाद देनी पड़ेगी कि
जो इन्होंने जनवरी में ठंड में प्रोग्राम किया, हाँ चिले कलान में किया, जैसे हमें जब हम वो फैरन पहनते हैं और कांगड़ी लेकर बैठते हैं घरों में, तो तब इन्होंने ये प्रोग्राम किया। कांगड़ी और फैरन का सुना होगा आपने? हाँ, सबने नहीं सुना होगा। मतलब एक बहुत बड़ा वो होता है चोगा जैसा, उसमें फिर कांगड़ी, कांगड़ी सुनी है? हॉट पॉट, फायर पॉट, वो रखते हैं और बैठते हैं। तो उस दौरान उन्होंने वहाँ पे ये प्रोग्राम किया। तो ये सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए फख्र की बात है कि इतने दूर से ये गए थे और इतनी ठंड में उन्होंने ये के लिए स्पेशल है। अच्छा प्रोग्राम किया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद को कोविड हो गया, तो मेरे से फिर मेरी पूरी फैमिली को कोविड हो गया। तो मेरे लिए मुझे सिर्फ 2 दिन थोड़ा सा मतलब बुखार जैसा रहा, तो थोड़ी हिम्मत थोड़ी कम हो गई, लेकिन उसके बाद फिर मैं स्ट्रांग हो गया। तो लेकिन अपनी फैमिली का पूरा मैंने फिर पूरा लगभग 15-20 दिन उनका पूरा ध्यान रखा। जो भी उनको चाहिए था, मतलब रोटी में खुद बनाता था, बर्तन खुद साफ करता था, उनको कब फ्रूट चाहिए था, कब क्या चाहिए था, उनको मैंने ध्यान रखा। तब मुझे ये भी एहसास हुआ कि माय फैमिली इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि ये जो भी ऐसी चीज़ें आती हैं, कोविड हो, कुछ भी हो, तो भले ही ये खराबी भी होती है इन चीज़ों से, मगर बहुत कुछ सिखा भी जाती हैं। तो मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मतलब मर्द औरत को घर में बराबर का काम करना चाहिए। चलो, अगर मैंने समझ लीजिए ये रोटी बनानी नहीं सीखी होती, बर्तन मांजने नहीं सीखे होते, तो शायद मुझे बड़ी दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई दूसरा हमारे घर रोटी बनाने के लिए नहीं आता। और जब हर एक के माइंड में इतना था कि क्या पता क्या हो जाएगा। तो ये भी मैंने सीखा था जब हम, क्योंकि 3 भाई थे, तो हमारे घर में कोई बहन नहीं थी, तो अपनी मदर की तब हम थोड़ी मदद करते थे, तो ये चीज़ें सीखी थी, तो ये काम आई। और ओएसिस से भी हमने ये सीखा कि कोशिश यही रहनी चाहिए कि हर काम आना चाहिए, मतलब इंसान को फिट रहना चाहिए हर काम में। तो ये उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर मेरे जहन में ये रहा कि जब मुझे रोटी बनाना आनी चाहिए, तो मेरी मिसेस को भी गाड़ी चलाना आना चाहिए। ये चीज़ें ओएसिस से सीखी हमने, क्योंकि जब तक हम अपनी फैमिली में ये ओएसिस नहीं लाएंगे, तब तक इतना बाहर ये नहीं फैलेगा। सबसे पहले अपनी फैमिली में ओएसिस लाइए। तो जिस दिन मैंने मिसेस को कहा कि मैंने इस तरह से आपकी फी भरी है, मैंने आपको ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए फी भर दी है वहाँ पे, तो आपको जाना है, वो पहले नहीं मान रही थी। तो फिर बाद में जब ज़्यादा मैंने उसको ये किया, तो फिर मैं उसको छोड़ने जाता था ड्राइविंग इंस्टीट्यूट, फिर वो वहाँ पे सीखती भी थी। तो फिर उसने 15-20 डेज के अंदर वो गाड़ी चलानी सीखी। और जब यहाँ आना था, तो फिर वो मुझे कह रही थी कि मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ूंगी। फिर गुलजार साहब ने कहा कि इस तरह से मुझे भी आना है, तो फिर वो कह रही थी कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को एयरपोर्ट छोड़ूंगी। तो ये चीज़ें जो होती हैं, मतलब मुझे भी आज, और जब मैंने देखा कि 2-3 बार वो फिर मुझे भी काफ़ी जगहों पे लेके गई गाड़ी में, तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो मैं महसूस कर सकता हूँ। और मैंने जाना कि दूसरों को खुशी तो हम देते हैं, लेकिन अपने घर में जब कभी कोई किसी को खुशी देते हैं, तो उस खुशी में कितनी खुशी होती है। तो इस तरह से मैंने सोचा कि इस साल भी हमने बहुत काम किए, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम किया। और मैंने समझ लीजिए
डॉक्टर नेहा का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ऑनलाइन सेशन हमारा लिया। तो उसमें मैंने खुद भी मैंने वो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की और मिसेस को भी ऑनलाइन क्लास वो ज्वाइन कराई। I would like to say that Amarjit Kaur, right? अमरदीप कौर। Amardeep Kaur. She was the brilliant participant और उन्होंने कोविड हुआ था, उनका कोविड काफी मॉडरेट था, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी कम हुआ था। इतनी गहराई से उन्होंने समझा, इतनी अच्छी तरह से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। माय गॉड, इट वाज समथिंग वेरी वेरी वंडरफुल सेशन, बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट, शायद ऐसा ही लग रहा था कि वो ही सब कुछ बुक इतनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने समझ में ला दी थी। तो हमने हम एक फैसिलिटेटर लाइफ कैंप का और मैं आपने तैयार किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने अपने स्कूल के बच्चों का एक सेशन लिया भी, उसमें अवेयरनेस आपको कोविड में, तो उसने भी अपनी मतलब प्रिंसिपल उनकी थी, उनको कोविड हो गया था। फिर वाइस प्रिंसिपल जो थे उनको फ़ोन किया, इस तरह से मैं ये बच्चों का सेशन लेना चाहती हूँ। तो मतलब ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो कहते हैं इसलिए लेना है, एंजॉय अपनी जो छुट्टियां हैं आपकी सर्दियों की, उनको एंजॉय करो। ऐसे भी टीचर्स होते हैं। फिर उसका दिल टूट गया, वरना उसका था कि मैं क्लास ले लूँ। मैं मतलब ये अभी भी सोचता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, उनको कैसे चेंज करें, और उनको यही हमारे जो आने वाले लीडर्स हैं यही चेंज कर सकते हैं। और ऐसे लीडर्स हमने J&K में भी पैदा करने हैं, पूरे इंडिया में पैदा करने हैं, तभी हमारा ये समाज बदल सकता है। ऐसे सिर्फ हम दुआएं मांगते रहें कि भगवान हमारा ये समाज बदल दे, भगवान हमारा ये समाज बदल दे, ऐसा होने वाला नहीं है। भगवान हम में ही है, हमको अपने अंदर झांकना है, उसको ढूंढना है, ताकत वो लेनी है और समाज को बदलना है। थैंक यू वेरी मच। ये थे दिलवीर जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट पर उन्होंने बहुत काम किया है, इसके लिए एक जोरदार ताली। और हम तो सबको आप कश्मीर टीम से सबके लिए ताली, ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन अब कश्मीर टीम का आखिरी शेर जो है, आगे आने वाला है, इसका थोड़ा सा मैं तारुफ कराऊंगा। मोहम्मद अमीन बेग साहब, ये जो मोहम्मद अमीन बेग साहब है, ये जो पूरी बरादरी है, प्रिंसिपल्स की बरादरी हमारी, उसका वहाँ पर प्रेसिडेंट भी है, ये NAP मेंबर भी हैं। कश्मीर में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्प्लीमेंट होने जा रही है, उसका मेंबर भी है। तो इस पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो ये अपनी स्टोरी को, अपनी जर्नी को कैसे बताते हैं? थैंक यू आप बेग सर शुरू करें, उससे पहले मुझे लगा आशिक सर, दिलबीर सर के जो कह रहे थे, आप लोग सब ने जो थैंक यू कहा दिलबीर जी को कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट में काम किया, सबसे द बेस्ट वे टू थैंक हिम इज टू आपने सबने अपने घरों में भी अगर यही करना है, तब जाके उसका सही थैंक यू होगा। सबसे अच्छी चीज है सबका साथ सबका विकास। तो तब जाके उनकी थैंक यू सही थैंक यू होगी। सो गुड आफ्टरनून। तो अभी आशिक जी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि पॉपुलरली नोन हियर बिकॉज आई एम कमिंग, इट इज माय 4th retreat 2018, 18, 19, 20 and due to 22 I could not attend due to COVID. Then again this is the 22 I'm attending again. So friends, the first question is that how I met Oasis. You know, it was way back in 2015 that Shivaji came to our Kashmir, met our brilliant person, Dr. Shah Faisal, who topped at the All India level the #1 IAS.
So he told us that you, Mr. Beg, we have made an arrangement that you will give a training to the principals so that you people should be in a position to speak brilliantly. You should be in a position to influence the people. You should have capability so that not only I'm the topper at the national level, I want my principals be at least my role models. So definitely, so we got an opportunity to work with Shiba, I think it was May 22, 23 and 24. And the most major impact of that particular workshop, that was the workshop on learning, it was totally on myself in the learning cycles. The moment we have a learning with Shibaji, I immediately utilized that workshop. Isn't it? Your work should not be here. You should have to pay off it also again a workshop. I immediately went to my institution, introduced the best learning, from the Shiba which we learned there in Kashmir among my students and among my students and also among my staff. And I got a tremendous feedback. I got a very tremendous feedback, particularly the concept of from the time management, and also I gave a new concept to them, that the mental toughness. Shiba, I also quote an example. I think it's 8 years back example. Shiba, when she came to Kashmir, she told about what the Tata, I think, about the Reliance. Reliance used to move for 10 kilometers to 20 kilometers on daily basis. Ask my staff members, how many kilometers you are walking? Even there was a single, finger was not up that I'm a 1 kilometer. But if you want to be the topper, if you want to do contribution to the society, you have to run. Ria, I find the ignition among the Ria. I find him in the morning, walking. The first credential of a leader is he must be a good walker. He has to first he has to make himself though physically strong. Even there's a leader, a leader with us, Swami Vivekananda. When I studied his literature, he was of the opinion, make your muscles of iron. Make your muscles of iron and nerves of steel. Then you will act as a thunderbolt. So my suggestion to the all young leaders are, no doubt you are good speakers. You don't have tremendous intellect. You have leadership qualities. But I want to see you in the morning, all walking 4 to 5 kilometers on daily basis. That would be my suggestion. Running. Isn't it? Once you are physically strong, you can be mentally strong, and you would be the big contributor towards the nation. My director is my Gulzar. I'm also the innovator also. Ashiji has already introduced me about a number of things. Mostly I'm speaking in English because my sister there, she cannot understand Urdu or in Hindi. Even I can talk in Punjabi, but unfortunately, she cannot, neither Punjabi, nor Urdu or nor Hindi. So definitely my whole this would be in English also. अच्छा थोड़ा उर्दू भी न बोलूं अरे हिंदी में कि अब नई चीज जो आपके साथ शेयर करनी है मुझे कि शिवाजी से हमने परमिशन लिया कि क्यों ना ओएसिस में हम थोड़ा पोइट्री भी इंट्रोड्यूस करें हाँ तो जाहिर सी बात है कि ओएसिस है हार्ट पे काम करता है तो जब हार्ट पे काम करना है तो हार्ट की जबान पोइट्री तो हमारे डायरेक्टर साहब यहाँ पर है कि माना कि इस जहां को हम गुलजार न कर सके, इसका नाम गुलजार है माना कि इस जहां को हम गुलजार न कर सके, कुछ खार कम तो कर गए जिधर से गुजरे हम. My sister there, my director from Kashmir is named by his Gulzar. Gulzar means to make it a heaven like Kashmir Valley. If it is not possible, माना कि हम जहाँ को गुलजार न कर सके, if it is not possible to valley of flowers,
but at least जो कांटे हैं, the thorns which are here and there, I can lift them so that the people can move. It is the what on my directories. So my assigned task, my director has assigned to me is we have a sharing session with Professor Siddharth. We call him as a professor. It would be a new thing to you, definitely, sir. So big clap with it. I have, in my 30 years career, I have not seen such a passion. In my 30 years career, I have not seen such a passion, even my professors out there. I saw tremendous passion with the Siddharth. So I was picking the right name, what should be the right name, and I got the right name and got the permission from Shivaji and also got the if I will call you is it advisable? They say, okay, even we have learned from the Oasis, call the people by the good names. Even, I think few days I will share my experiences with you. Even I have to work at the national level also now. Because recently a team from Delhi came to my Kashmir Valley. Isn't it, there was a course on leadership. We have State Leadership Academy in our own place. They told we will give a major share. But where from you have learned such things? I told him the entire credit goes to the Oasis family. Even if they have not met me 7-8 years back, definitely I would not have been of such a man, of such an impact as I am presently. It is because of the Oasis. They taught us how to share things, how to care things, how to influence the people, and how to influence through heart. That is very, very important. Even Shivaji told us, if you will go for the lecture system, this is not the sharing. If lecture is there, lecture model is not a workable model. There should be a 3 days workshop. Then there is a possibility some change is possible. So definitely, once I was sharing the Oasis experience with the NEPA people, they are working on the national level throughout the India. They told me, you share your experience. What is the leadership definition? But you have to speak your heart. मैंने उनको कहा कि मैं यूँ शुरू करूँगा कि ऐसा है कि थोड़ा आइडिया मुझे ये आए कि दिलीप कुमार का वो एक डायलॉग था कि ज़माना हमसे है, हम ज़माने से नहीं. हाँ, इस तरह से मैंने ये इस लीडरशिप को वहाँ पेश किया नीपा के सामने कि ज़माना हमको क्या मिटा सके, ज़माना हमको क्या मिटा सके, ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना, हम ज़माने से नहीं. So therefore, for example, if we want to make a change, we have to be mentally strong. We have not to be emotional. We have to be mentally strong. But we have to be a change maker by setting an example. So I'm debating. So my assigned work is my experience with Professor Siddharth. After every 15 days, we are meeting. It is not possible. We ask the Shivaji. It is very difficult to come from Kashmir to Gujarat. A bit difficult. So we must have some mechanism. Shiva is such a brilliant, isn't it? She immediately provided us the solution. My diamond is with us, Professor Siddharth. He will meet you after every 15 days. Well, how lucky we people are there. You may get an opportunity in L3. Yeah, sir, MHE people are here. But we are getting this, the opportunity of the Oasis after every 15 days. We are interacting with Professor Siddharth. And we have already, done our L3 way back. We are now revising the same models. And what we have learned in L3 models are learning
we are, on other on relationships and on love, isn't it? On marriage, on different areas. So we decided with the professor, at least we should revise the 7 habits of the highly effective people. So presently, in the 7 habits of highly effective people, we are presently we have already completed the paradigms. We have completed the habit first to be proactive, any taking initiative, act to be acted upon, and also we have completed the circle of concern and circle of influence. And presently, when Professor Siddharth was working with us on how to write the note on demise, जैसे कि शिवाजी ने कहा कि एक बार हमें जब कश्मीर आके कि मरने से पहले मरो, and इसका मतलब ये होता है कि डिमाइस नोट में क्या होता है कि let's make an ideal environment that we have to die. It was really a novel experience. It's okay. You share it right now. Okay. My young people should also learn. Okay, no problem. So we were doing this exercise with the Professor Siddharth. All of a sudden, we came to know, our educator, Mahadev Bhai, is no more. On the same day, I was supposed to reflect it also. I reflected about on his death. Even Shivaji, we reflected. It was really a sad, the news from the Oasis that we have lost an educator. Even I have used his example, Professor Mahadev's example, even in my video. I want to convey to the same person. He said, I have already used one of your examples in my video. If you have any objection, I was just going to write through Shiba. She might contact them. Unfortunately, I heard that she is no more. So I think this is a great learning with the Oasis. We are lucky enough, and that we are the part of the Oasis, organization. And this is a world-class institution. All you people have a great opportunity. And my suggestion to all the young leaders is there: you have not to be emotional. You have to work on your careers also, and also you have to work for the society also. So this is my message to all of you: not to be so much emotional. We have to help the society, but side by side, you people have to develop your own career. Because in my place, I'm working presently because I've been inspired a lot by the Oasis. I'm presently working on communication skills at my own place. I'm working on career counseling. Isn't it? I'm being the member of the National Education Policy, and I'm working in different arenas. Basically, I was inspired to Oasis, how I can help my society in a better way. So that way, I am highly thankful to the Oasis that they have increased my price. Isn't it? Because everywhere in my own place, I'm being called, even Romana ji and myself. Definitely Romana ji, she's not presently here. We are 2 members, both belong to Oasis family. Even Romana ji told me, something Oasis has given to you. You are now the #1 out there in the Kashmir Valley. It is because of the blessings of the Oasis family, and working with the young kids out there, because we don't have a modus operandi to how to operate. Even our Deen says, وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. यानी नेक काम करो, तभी आप लोगों तक पहुंच पाओगे. So we had in our religion such, but the Oasis family give us the modus operandi how to operate in different situations. Even I have given some theories presently. One of my theories is the pressure cooker theory. It is a solution for the kids out there. Even recently, I have given also one theory, that the love therapy, which was been appreciated by Shivaji also, is a solution. And I think the love is a little, it can cure a number of our problems, isn't it?
even I'm interested in my own place because I have been highly inspired by the Oasis. I'm also asking my, submitting a proposal in front of government. We must also implement the happiness curriculum where? In my place out there in the Jammu and Kashmir Union Territory, so that once people are happy, once there's a smile like Shiva on your faces, isn't it? So definitely there would be a big change. It is not an easy, for example, you say you find a smile, it takes, I think it's hardly 20 to 30 years to keep a smile on your face. It is not an easy, because you face number of critical situations, you face number of problems. Definitely out of these problems, still you have to keep a smile on your face. It's not an easy. This is the leadership, how to keep a smile on your face, even at the different situations. Even I was having a deliberations with the Shivaji, but she never told me we are in a distressed situation. She was communicating. I was sending my video, give my critical assessment of this thing. She shot some couple of days on once, but I was not knowing what's happening in the Oasis. But this is the leadership. I am hopeful that in near future that all of you will work with missionary zeals, isn't it? Not with emotions, with missionary zeals. You will build your careers also, and side by side you will be the big contributor to the society, to your homes and to the country. Thank you, and thank you very much. Lastly, जैसे मैंने आपको कहा कि I'm the first person of the introduction of the poetry in the Oasis. तो मैं यूं एक शायर कहूँ, गालिब का शायर है, पूरी उम्र मैं यही गलती करता रहा, पूरी उम्र मैं यही गलती करता रहा, धूल मेरे चेहरे पे थी हो तो मैं आईना साफ करता। थैंक यू। conclude Good morning, esteemed dignitaries, respected principals, benevolent teachers and their students. We extend heartfelt greetings to all of you. We really appreciate your presence. Misal project seeks to identify the youth and prepare to change the society. I would like to congratulate and thank the Misal organizers who conducted these kind of programs where the students get the chance to work on those issues on which we often fail to work. लेकिन मेरे लिए वो कंपटीशन नहीं था, मैं यूँ कहूँगी कि और इसने मुझे दूसरी जिंदगी दी। I want girls to be as free as boys are. फर्स्ट पॉइंट जो इतने सारे दिनों में मैंने पहली बार सीखा वो था कि आज अगर मुझसे गलती भी हो जाती ना, उस मिस्टेक को ही लेकर उसे सुधार कर मुझे आगे बढ़ना है। तो एक नजरिया बन गया मुझ में कि मैं खुश रहूं या मैं अपने आप को कैसे जताऊं, पूरा दुनिया मेरे अपने ऊपर है। So it was really a great journey. I learned a lot throughout and I would love to be part of this program again in future. As a judge, मैंने जज कम किया है लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ। I was one of the judges, not the judges. I was a learner. Okay, so once again, before telling you about our journey of Oasis in Kashmir, I would like to share a video. After recalling the decision which we had taken to go for this program, now I feel that we had taken a good decision. Oasis has made me really a better person. The most effective and efficient training that I ever received, that was from the Oasis. मुझे जो जिंदगी का बड़ा मकसद मिला है, मुझे वो भी इस प्रोग्राम के जरिए मिला है। शायद वो मकसद मेरे अंदर कहीं था,
लेकिन उसकी पहचान मुझे अब हुई है। believe that for all these years, 36 years, I have been associated with them not through the department even, but through my heart. मुझे अगर in my 40s ये चीज समझने को मिल रही है तो इन बच्चों को बहुत अर्ली एज में मिल रही है, तो ये हमारा फ्यूचर जो है ये कितना बहुत रोशन होगा। Hats off to this family. Why? At least कोई फैमिली, कोई घर तो है जो हमारे बच्चों के उस दुख दर्द को समझ पा रहा है। इन्हें उड़ने दीजिए और आप देखेंगे माशाल्लाह जब हम अपने स्कूल में ऐसा एनवायरनमेंट लाएंगे, हम इन बच्चों के साथ वैसा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर भी बहुत आगे जाएगा। मैं यहाँ बहुत